Sir, I rise in strong support of the Tribunals Reform Bill 2026. Sir, at first glance, this bill may look technical. It speaks about tribunals, appointments, commissions, service conditions, data grids and procedures. But in reality, this bill is about something very basic. It is about the common citizens' wait for justice. Sir, ये बिल सिर्फ ट्राइब्यूनल्स का बिल नहीं है, ये बिल जनता के भरोसे का बिल है. For a retired soldier, the Armed Forces Tribunal is not an institution on paper. It is where he goes when his pension and disability benefit or service matter is stuck. So for a government employee, the Central Administrative Tribunal is not just a legal forum, बल्कि वो उसकी आखिरी उम्मीद का दरवाजा है, क्योंकि जब उसकी प्रमोशन रुकती है या ट्रांसफर में अन्याय होता है, वो तो असर सिर्फ उसकी नौकरी पर नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी पर पड़ता है. So for a family living in a polluted area, the NGT is often their hope for clean air, water and basic dignity. For a consumer or home buyer, delay in justice means increased EMI, rent, legal fees and mental harassment. Sir, एक छोटा व्यापारी या MSME ओनर बहुत बड़े मार्जिन्स पर काम नहीं करता. उसका पैसा अगर किसी डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, बायर या लीगल डिस्प्यूट में फंस जाए तो उसका पूरा व्यापार चौपट हो सकता है. एक बड़ी कंपनी के लिए 10 या 20 लाख रुपए का डिलेड पेमेंट सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री हो सकता है, लेकिन एक छोटे बिजनेसमैन के लिए वही पैसा उसकी वर्कर्स की सैलरी, दुकान का रेंट, बैंक की EMI और अगला रॉ मटेरियल होता है. सर, आज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही लगभग 30,600 केसेस आर पेंडिंग, जिनमें से 10,000 केसेस एडमिशन स्टेज पर ही अटके हुए हैं. सर, इस वजह से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस में लॉक्ड पड़े हैं. जब बड़े केसेस सर इतनी देर से अटके रहते हैं तो उसका सीधा असर छोटे सप्लायर्स, MSME ओनर्स और उनके वर्कर्स पर पड़ता है. दैट इज व्हाई रिफॉर्म्स इन tribunals are very important. So for citizens and small businesses, tribunals are not merely buildings. So they are hope. And when there are vacancies, delays and lack of accountability, that hope slowly turns into frustration. Sir, I have seen pain very closely during my work in the Delhi Commission for Women. Of the 1,74,000 cases that we handled in that commission in 8 years, sir, I remember one distinctly. वेस्ट बंगाल की एक लड़की को किडनैप करके दिल्ली के GB रोड में बेच दिया गया. जब उस लड़की के भाई को पता चला तो वो कस्टमर बनकर वहां पे GB रोड में गया और उसने जैसे ही अपनी बहन को देखा वो फूट फूट के रोने लगा. सर, वो हमारे पास आया और दिल्ली पुलिस की मदद से हमने लड़की को रेस्क्यू किया. सर, इसलिए कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सर इसीलिए उनके सिलेक्शन और उनकी स्टाफिंग बहुत ही ज्यादा important होती है. Sir, they should not be toothless tigers, but be so powerful that they give swift justice and hope to millions. That's exactly what the Tribunals Reform Bill 2026 hopes to achieve for tribunals. So this bill creates a National Tribunals Commission to oversee the selection process for chairpersons and members, review the performance of tribunals, oversee inquiries into complaints, and maintain a national tribunals data grid. So in simple words, this bill brings structure where there is scattered functioning, transparency where there is opacity, and accountability where citizens feel helpless. So one of the biggest problems in tribunals has been vacancies. A vacant post does not look very dramatic in government files. But sir, on the ground, every vacancy means hundreds of cases delayed. So this bill creates a more organized selection through search cum selection committees, bringing judicial members, technical experts and institutional oversight into appointments with framework for recommendations and appointments to move in a very time-bound manner. That means fewer vacancies, faster functioning and better justice delivery. So the National Tribunal Data Grid is also a very, very important reform because what gets measured gets improved. How many cases are pending?
Where are the vacancies? Which tribunals are moving slowly? So without data, reform is merely guesswork. And with data, reforms becomes targeted action. Another very important point in the bill, which it addresses successfully, is autonomy and independence. The National Tribunals Commission will be headed by a former judge of the Honorable Supreme Court or a Chief Justice of the Honorable High Court, along with judicial and technical members. Because tribunals must be fast, but they also must be fair. Speed without fairness is dangerous. Fairness without speed becomes completely meaningless. So this bill tries to bring both of them together. So institutional reforms do not always make loud headlines. They do not trend for a week, but these are the reforms that quietly change lives. And that's exactly what my government does. Quietly but steadily, we are moving towards Viksit Bharat. So when a soldier's pension matter is heard faster, that is nation building. When a widow gets her rightful relief without running from post to pillar, so that is nation building. When an MSME owner can pay salaries on time because his dispute has got resolved, and I would like to say because her dispute has got resolved quickly, so that is doing ease of business. When a citizen feels that the system is listening, so that is democracy becoming stronger. Under the able leadership of my Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the focus of the governance has been extremely clear. Systems लोगों के लिए काम करने चाहिए. From technology and digital public infrastructure to ease of doing business and justice delivery reforms, the effort of my government is clear. We are making institutions more efficient, transparent and citizen-centric. So this bill is part of that larger vision. सर, लोग जस्टिस के बारे में बहुत बड़े बड़े शब्दों में बात करते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए जस्टिस सर बहुत सिंपल होता है. मेरी सुनवाई हो, समय पर हो और ईमानदारी से हो. और सर ये बिल वही कर रहा है. सर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन रिफॉर्म. सर, हमारे कई महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सर, ये मुख्य रूप से दिल्ली या मुंबई में ही बैठते हैं, जबकि उनके पास जो केसेस आते हैं वो देश भर से आते हैं. सर, नॉर्थ ईस्ट से, आंध्रा से, किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको अपनी सुनवाई करानी है तो उसे देश के दूसरे छोर से यहाँ आना पड़ता है. सर, हमारे अपने ट्राइब्यूनल सिस्टम्स ने दिखाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन संभव है, और इसीलिए सर मेरा सुझाव है, जो मुझे पता है कि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के द्वारा ये होने की भी कोशिश हो रही होगी. सुझाव ये है कि सर ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को जिम्मेदारी दी जाए कि वो समय समय पर सर ये एनालिसिस भी करे कि किन ट्राइब्यूनल्स में रीजनल बेंचेस की ज़रूरत है, और उसकी रिपोर्ट भी रखी जाए और उसके ऊपर भी सर काम हो. क्योंकि सर न्याय सिर्फ निष्पक्ष और तेज ही नहीं, न्याय ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान तक पहुंच सके. सर, द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 is not just about tribunals. It is about the trust that the aam aurat and the aam aadmi has in the system. And sir, when citizens trust institutions, democracy becomes stronger. So I must also express my deep pain at the constant ruckus that is being created inside the parliament by the opposition members. Speak sir, on the subject. Speak sir, on the subject. I'm just coming to I'm just making a point here, sir. So how can they walk out in such an important debate? Have they not read the bill? Don't they want to give constructive suggestions? Isn't that their duty? Why are they dancing here? Why are they sloganeering here? Please, why are they creating a ruckus here? Why are they yelling? Why don't they stick to the point, and why don't they read, and why don't they be present in such important debates, sir? I think it's very, very disappointing, sir. Sir, I strongly support the bill, and I congratulate the Honorable Law Minister and Honorable Prime Minister for bringing a reform that is practical, necessary and deeply citizen